टेक्निकल ग्लिच मेरी क्लास ही आता है, आई डोंट नो व्हाई. ओके सो ओके जी, वेलकम यू. आई वेलकम यू टू द सैशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड जोग्राफी ਦੇ MCQs ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट ਦੇ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰमेंट ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਪਾਰਟ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਵੀਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰमेंट ਦਾ ਮੇਜਰਲੀ ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ. ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਇਨਵਾਇਰमेंट ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. then followed by some geography MCQs. before that UPSC PCS batches have already started. तो ਤੁਸੀਂ batches ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ at your convenience, right. demo classes ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. offline online classes you can attend and you will be provided the complete study material from our side. जिन्नी भी important standard books तुसी cover करनी है, right. and this is the code LP Nikita. तुसी code use कर सकते हो to avail the 10% discount. website the link ਤੁਹਾਨੂੰ नीचे description box ਵਿੱਚ given है. this is the page that opens जो तुसी link open ਕਰਦੇ ਹੋ the launchpad ਦੀ website launchpadies.in. and जिन्ने भी courses ने ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है कि साडा नायब तहसीलदार का कोर्स है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ डिस्काउंट ऑफर चल रहा है. एंड दैन ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ टेस्ट सीरीज है दे आर अवेलेबल एट 500. द कोड इज एंड गेम, राइट. वो कोड लगा के ਤੁਸੀਂ डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हो. then if you choose for one time payment अगर any other course थे then we are offering you a discount of 10%, right. and additional 10% on code LP Nikita, right. this is the discount percent for the code for the additional discount percent. then course registration fees 20,000. then you can choose for your installment options, ठीक है. and then this is followed by ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ. you add to the card ਸਾਰੀ detailed information you fill it and then ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਸ ਵਿੱਚ enroll ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. starting with the first MCQ for the day ਜਿਹੜਾ PDF ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ launchpad education पंजाब तो मिल जाएगा. एंड रेगुलरली टेलीग्राम चैनल के उत्ते सारे लाइव दी अपडेट्स PDFs एवरीथिंग इज शेयर्ड. तुसी टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लो, राइट. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ फॉर द डे. ट्राई टू अटेम्प्ट द आंसर्स वेरी क्विकली एंड योर एडिशनल information is most welcome in the comment section. moving on to the first MCQ. consider the following pair of Ramsar sites in India and their location. पहली रामसर साइट है कोलेरू लेक, आंध्र प्रदेश. Ashtamudi, Tamil Nadu. Lonar Lake is in Maharashtra and Kavartal is in Bihar. You have to mark the correct statement. Correct answers जेडे हो तुसी mark करने हैं. Okay, so many answers we have got. And my question to you: Asia the largest shallow fresh water lake जेडी है वो केड़ी है? 1 and 2 we have got the answer. Okay. answer to this question is C. 1, 3 and 4. Ashtamudi is in Tamil Nadu. किथे है? ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ? these have been somewhere seen in news. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ in the session. it is in Kerala, correct. ओके प्लीज रिमेंबर दीज फैक्ट्स जिन्ने भी आप कवर कर रहे हैं. करेक्ट. मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आया. लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया केड़ी है? इट इज कोलेरू लेक जेडी की किथे है? आंध्र प्रदेश. मूविंग ऑन. विद रेफरेंस टू रामसर कन्वेंशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी जेडी की प्रोवाइड कर दी है फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ wise use of wetlands and their resources. then administrative services to the convention जेडी है वो कौन प्रोवाइड करता है? bird life international. it is कोलेरू shallow fresh water lake in Asia. ठीक है. options you have is 1, 2, both and then we have is neither. रामसर कन्वेंशन के बारे तुहानू correct statement asking. A 1 only. okay. What about the second statement? Administrative services ਜਿਹੜੀ ਹੈ provide ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ by bird life international. okay. ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ closely 6 other divisions ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਹੈ bird life international. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड ਜਿਹੜੀ ਹੈ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नहीं करती, राइट. आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ IUCN
एंड विंडो वेटलैंड WWT पता होएगा, विंड फाउल एंड वेटलैंड ट्रीटी, ये सब ट्रीटी जी क्लोजली वर्क कर दिया है विद रामसर कन्वेंशन, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगेन Avicennia marina, whose genome has been sequenced recently, is tree, bacteria, bird and virus. Again I am telling you ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ environment ਦੇ questions ਅੱਜ ਦੇ session ਵਿੱਚ discuss ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, they are from your current affairs, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ current affairs ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ your environment the session, it's up to you. Go on, quick answers. Scientists ने recently genome sequence किया है Avicennia marina. It is a species of. B. How many of you are guessing? Genome sequencing का मतलब सिर्फ बैक्टीरिया वायरसेस नाल ही होता है। जेडे guess कर रहे हैं एक बार हाथ खड़ा करियो, so that I can guess कि कौन guess कर रहे हैं, फिर मैं explain करा कि है कि। Okay, you say that it is bird, bacteria, virus नहीं किसी ने बोलिया। Go on. Tree. Guess भी कर रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं। आंसर इज ए, इट इज ट्री। ये ट्री दी एक स्पीशी है मैनग्रोव फॉरेस्ट विच सैलाइन वाटर विच भी ग्रो करती है एंड फ्रैश वाटर विच भी ग्रो करती है, लेकिन सैलाइन वाटर विच यदि स्टंटेड ग्रोथ है, उस स्टंटेड ग्रोथ नू प्रमोट करने लई ताकि ये ग्रोथ जिहड़ी है उन्होंने असीं प्रिवेंट कर सकीए एंड टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी इस प्लांट नू ग्रो किया जाए, इस ट्री नू ग्रो किया जाए। दैट इज वाई इहदी जीनोम सीक्वेंसिंग जिहड़ी है की गई है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन थे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग। Bioeconomy is an economy which uses renewable natural resources to produce food, energy, products and services. Second statement, gross environment products, it is assessment system to measure ecological status. Then green GDP. Green GDP is an indicator of economic growth with environmental factors taken into consideration along with standard GDP of the country. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ simply definitions ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ regarding the bioeconomy, gross environment product and then green GDP. Go on. Okay, first answer we have got from Govind, says D, सारी ही statements correct है. Why is the speed of answer so slow? 1 and 3. Okay, answer is D, 1, 2 and 3 सारी ही statements correct है। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ definitions ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਇਓ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ for its various activities to produce food, energy. Then gross environment product is the assessment system to measure the ecological status. Green GDP ਜਿਹੜੀ environmental factors ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ while calculating, while considering the standard GDP. Moving on, which among the following statement correctly defines ecological civilization? A civilization whose worship component of ecosystem, who worships component of ecosystem, in which human community designed to promote overall well-being of the people and the planet. Third statement कहती है एक ऐसी civilization है which promotes sustainable use of ecological resources, and then statement A and B both are correct. Okay, how many of you think questions का level थोड़ा जा raise हो गया है? With which I assume की speed जड़ी है थोड़ी जी slow हो गई है. How many of you think that? Okay, D. Okay, 2 students think that questions the level raise हो गया. Answer is B, ecological civilization in which human community is designed to promote overall well-being of people and the planet. It's okay if you think level increase हो गया, आपा hard level दे questions cover करने हैं. It's okay. And most importantly, I am again repeating, ये static the environment नहीं है, we are covering जो current विच रहा है, right? Okay, moving on. Which of the following statement is correct regarding the air pollution control device
scrubber, air pollution control device scrubber jada hai, that was seen in news, which is the correct statement. Then it separates particulate matter from the gases in the electric power plants. It allows settling of the pollutants in a gas to settle down due to effect of gravity. Then it employs a spray of water to catch the pollutants during the emissions. And D statement carry, it imparts electrical change to the particles that make them stick to the metallic plates. यानी कि ऐसा मेथड, सारी स्टेटमेंट्स कह रही हैं कि ऐसा मेथड है कि ਜਿਹੜੇ एयर ਦੇ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ ਜੋ 에ਅਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। obviously sustainability should be the priority। statement ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ecological system civilization, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਡ ਪਲੈਨਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਗੀਤ ਯੋਰ ਡਾਊਟ ਇਜ਼ ਸੋਲਵਡ। ਗੋ ਔਨ। ਹੁਣ ਸਕਰਬਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। C, it employs spray of water to catch the pollutants during the emission. This is the correct answer। scrubber ਇਹ device use ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਪਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ ਜੋ ਸਸਪੈਂਡਡ ਹੈ 에ਅਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, these are important questions। next, Rome Declaration recently news ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, it is related to carbon neutrality, plastic pollution, conservation of biodiversity, and then we have this marine pollution। go on। carbon neutrality, okay। by the way, how is your preparation going for the exam? it's almost 1 month left na। preparation कितना चल रही है exam दी? on off या regular चल रही है? Rome Declaration is related to carbon neutrality। Rome Declaration adopt कदों की गई है? Any answers? When is Rome Declaration adopted? Let us cover some additional information। Okay, Govind says that it is going on regular। Okay, बाकी सारे दी तैयारी कितना चल रही है? आज वाले क्वेश्चंस देख के डाउन लग रही है, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तुम लोग क्वेश्चंस कवर करो, आपको सब करा देंगे। ये करंट है इन्वायरमेंट का, ठीक है? तो अब इसको रेगुलर सेशन की तरह लो, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, राइट? चलो नेक्स्ट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोलॉजी, एंटी बायसेस रेफर्स टू competition between the organisms of the same species, an association between two species where one species जो है it kills to feed on the other, a relationship in which one organism is benefited by direct utilization of another, secretion by an organism which is harmful to others। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਬਾਇਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? एंटीबायोसिस। एंटी इज समथिंग यू कैन रिलेट नेगेटिव एस्पेक्ट में जा रहा है, ठीक है? ओके, अंजलि इज कॉन्फिडेंट। ओके, वी आर एक्सपेक्टिंग कोऑपरेटिव दी भी डेट सून आ जाएगी। अलमजीत सेज नायब दा फिल नहीं की तो नॉट अ प्रॉब्लम, कोई नहीं, प्रिपेयर करी चलो। गो ऑन। Antibiosis, this is something I am saying that anti ਜਿਹੜੀ statement है something anti is something negative। ਹੁਣ confuse ना हो जाइयो between these two terms। go on, quick answers। D, correct answer is D here। secretion by one organism which is harmful to the others is known as antibiosis। ठीक है जी, remember this term। moving on to the next question, carbon border tax recently news ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। what is it? it is related to tax ਜਿਹੜਾ ਕਿ impose ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ thermal power plants of European Union। टैक्स ਜਿਹੜਾ कि impose ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ on the export of goods from the countries with strict
climate policies, tax ਜਿਹੜਾ impose ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ on coal mining sector in Australia, and tax ਜਿਹੜਾ ਕਿ impose ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ on the import of goods from the countries with less strict climate policies. Go on. Which is the correct answer? Carbon border tax. Go on. How many of you can answer? Kashish says that it is B, imposed by European Union. European Union, it is A. B, D. Option D. Answer to this question is option D. A tax ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਪॉलिसीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਪॉलिसीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਾਰਬਨ ਬੋਰਡਰ टैक्स। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियंस एम्बिशन टारगेट ऑफ इंड्यूसिंग 55% ऑफ कार्बन एमिशन कंपेयर टू 55% कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है यूरोपियन यूनियन का टारगेट है बाय 2030। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ਇਹਦਾ दूसरा नाम की है फिट फॉर 55 इनिशिएटिव। फिट फॉर 55 इनिशिएटिव न्यूज विच देखा गया सी, व्हाट इज दिस? ठीक है, याद रखियो। देन इट इज पुशिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म फ्रॉम 2026। अगेन एडिशनल इंफॉर्मेशन important. It seeks to address carbon leakages, that is companies decamp to places with cheaper pollution cost and looser climatic regulation. It is a tax on carbon emission ਜਿਹੜਾ ਕਿ impose ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ imported goods ਤੇ ਉਹਨਾਂ countries ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ carbon policies strict ਨਹੀਂ ਹੈ। additional 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਜੋ important ਹੈ। keep this in your mind, right? It aims to create a level of playing field between imports and the domestic production। ਤਾਂ level ਵੀ create ਕਰਨ ਲਈ, equality ਵੀ create ਕਰਨ ਲਈ between import and export, this is one of the initiative। ठीक है, moving on। Consider the following difference between parasitism and predation। Parasite jada hai that kills the prey, whereas predator does not cause death of the host। Second statement, in parasitism weak feed on the strong, while predation the strong feed on the weak। Example लेके करो, parasites the example जड़ा है तुसी symbiotic relationship कर सकते हो, एंड प्रीडेशन विच एग्जाम्पल तुसी ले सकते हो, एक लायन जिहड़ा है वो डियर नू खा रहा है। दिस इज आई एम टेलिंग यू एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेशन। एंड पैरासिटिक विच तुहानू एग्जाम्पल दिता है किसी भी दो ऑर्गेनिजम्स दे विच तुसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की गल कर लो। हुण एग्जाम्पल्स दे नाल मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, वी हैव ऑलरेडी गॉट द करेक्ट आंसर्स। Answer is B, first statement, the statement is interchanged। Parasite jada hai that does not kills the prey but predator kills the prey, right? This is one form जो example देता है, तुसी समझ सकते हो concept को, right? Moving on to the next question। Consider the following statement। Net zero energy building is one that relies on renewable sources to produce as much energy as it uses, usually measured over a course of a year। Then net zero carbon emission is a concept in which there is no carbon emission in the atmosphere। यानी कि net zero ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ atmosphere ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ carbon ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ release नहीं कर रहे। Third statement says शून्य campaign aims to promote zero pollution delivery vehicles by working with consumers and industry। And my question, शून्य campaign किदा initiative है? क्वेश्चन आंसर तो देना ही है। शून्य कैंपेन इनिशिएटिव किधर है? 1 and 3। ओके, सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट जीरो कार्बन एमिशन होएगी। शून्य कैंपेन इज द इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग, गोविंद, राखी, राधिका, ग्रेट।
वेरी नाइस, गीत, गुड। चलिए अगले क्वेश्चन थे। Which of the following forests that are found in the Western Ghats hills of northeastern region and Andaman and Nicobar Islands? Mangrove, dry deciduous, tropical evergreen, semi-desert and desert vegetation. Geography the question है, very easy question कि सानू वेस्टर्न घाट्स, बाकी सब छड़ दो, ईस्टर्न या वेस्टर्न घाट्स तो तुसीं पढ़े ही होएगा, ईस्टर्न रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स which type of vegetation is found? A, Sahil says A. Then we have C, answer to this question is C, tropical evergreen forest. Correct. Moving on, consider the following statements is regarding to deciduous forest. It is found in the region jithe rainfall hai between 70 to 200. Then forests are divided into moist and dry on the basis of availability of water. Go on. Southwesterly monsoon. Okay, go on. Deciduous forest ਦੇ ਬਾਰੇ, moist and dry deciduous ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀ rainfall caps ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, moist and dry ਦੇ ਉੱਤੇ? एक dry deciduous है, एक moist है। First statement is covering the general notion about C. Sure, एक बार statement ध्यान ਨਾਲ ਪढ़ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ C आंसर कर रहे ने, read the statement once again. 70 to 100 is dry, and then we have is 100 to 200 is moist. Correct. जिन्होंने आंसर C किया है, please read the statements once again. Okay, another variety of question we have got, one only. Okay, किसी दे होर आंसर्स पढ़ोगे दोबारा स्टेटमेंट? Go on. A, answer change. Answer is, which of the following is correct? A, it is one only. Why? Availability of water the basis से नहीं है, it is on the availability basis of availability of rainfall. ठीक है जी, I hope it is clear now. Moving on to the next question. Consider the following statement related to forest. Dry deciduous and scrubs grow in the area जिथे rainfall है 50 to 100 centimeters. Mangrove forests are called tidal forest because of their dense growth. Options 1, 2, both, and then we have is neither. Go on. Now, purpose of including this question to your session is, this is a previous year question, right? So एक चीज दसनी है दे चो, that is why this question. Neither. Okay. B. Okay. Any more answers? Second is wrong. Why? You say one is wrong. Okay. Answer to this question is C. Both the statements are correct. Now purposes हुने तो हमें dry deciduous दा जेड़ा है limit आपा कुछ और की थी, लेकिन scrubs grow in this area. Scrubs दी नाल देती है, this is the limit जो तुसी choose करनी है. Both the statements are correct, right? ये तो बिल्कुल correct है. Mangrove forest is called tidal forest because of the dense growth, right? And answer की the according, because of the presence of scrub there is a minute variation between the rainfall. जो आप 70 to 100 वाली and 100 to 200 वाली variation करते हैं, that is what standard books of NCERT tell us. And different books which different variation देती गई है, plus minus कुछ 20-50. That is why I have included this question, ताकि तुझे difference समझ पाओ, right? Moving on. Seasonal or periodic movement of pastoral farmers with their livestock over relatively short distance and pastures provide करनियां due to different climatic conditions. इस process ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं? Options: lay farming, crop rotation, transhumance, and then we have is none of the above. Tidal growth, you are going in the
lot of scientific aspect. मैनग्रोव फॉरेस्ट द वन ऑफ द बेसिक फीचर यही है कि उसे डेंस ग्रोथ है, राइट? सो दैट इज वाई बोथ द स्टेटमेंट्स वर करेक्ट. आई होप यू आर एबल टू रिलेट. ठीक है जी, इस सिस्टम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सी ट्रांसह्यूमेंस. नेक्स्ट, consider the following statement related to farming. In irrigation, farming method should be focused on sustaining or recycling water. Intensive commercial farming uses lot of manpower or on a relatively small part of the land. Go on. देखो certain questions होंगे जिथे आप बहुत ज़्यादा in depth जाके अपनी science use करनी है. Certain questions ज़्यादा scientific हो जाओगे तो you will mark the wrong answers. ठीक है? Go on. Which is the correct statement? This was a previous year for your information जो आप पीछे कीता है mangrove वाला. I just wanted to share this question. Okay, you say that both are first statement is correct. Intensive answer is C. Both the statements are correct. In intensive commercial farming, small plot of land होते काफी ज़्यादा, a lot of manpower on a relatively small plot of land. और manpower technical भी हो सकती है, labor intensive भी हो सकती है, right? Moving on, consider the following statements about the farm practices. In shifting agriculture, a clearing forest is made by cutting and burning the trees, and is a wasteful method of cultivation. Then in subsistence farming, whole family jari hai that works on the farm field is not very high and farms are very small. Do we have the answers? Very simple question about the farming practices. Any answers? Sahil says C, both the statements. Rolly, Nancy, correct. Answer is C, both the statements are correct. Climate agenda called Fit for 55 is to combat climate change is launched recently by coalition of G7 countries, European Union, USA, and then we have this Germany. We have done this some time back. डबल स्टार मार्क करके दसिया सी कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. इट इज बी, यूरोपियन यूनियन. ओके, रैंडम क्वेश्चन. G20 दी चेयरिंग कंट्री केड़ी है दिस ईयर? G20 चेयरिंग कंट्री. मूविंग ऑन, which of the following is greenhouse gases? Water vapor, carbon dioxide, nitrous oxide. G20. Indonesia, 2023 is India. What is the answer to this question? D, 1, 2, 3. सारियां ही जड़ियां हैं, they are greenhouse gases. Which of the following is known as Sorrow of Bihar? Gandak, Tapi, Kosi, and then we have this Son. Sorrow of Bihar. Okay, answer is C, Kosi. On which river Bhakra Nangal Dam is situated? Very easy. Halwa question. Ravi, Satluj, Gandak, and then we have is Yamuna. Correct. Answer is B, Satluj. Which of the following river does not form any delta on its mouth? Ganga, Mahanadi, Tapti, and then we have is Kaveri. Does not form. ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टास बना दिया है या वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा बना दिया है? आंसर इज सी, तापी. विच रिवर्स फॉर्म डेल्टास, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कृष्णा रिवर किथों ओरिजिनेट कर दिया? महाबलेश्वर, अमरकंटक, बैतूल, एंड देन वी हैव इज मानसरोवर. ईस्ट फ्लोइंग, वेरी नाइस. एंड अगर किसी ਨੂੰ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ, ਈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ, ਕੋਸਟਲ ਪਲੇਨਸ, ਕੋਸਟਲ ਲੈਂਡ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਕੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਵਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 12 ਵਜੇ ਲਾਂਚਪੈਡ IAS ਤੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਕੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ, ਹਿਮਾਲਿਆ, ਹਿਮਾਦਰੀ, ਨਾਰਦਰਨ ਪਲੇਨਸ,
दैन सेंट्रल हाईलैंड्स, डेकन प्लेट्यूज, ये सारा कुछ आज आप करना है लॉन्चपैड IAS ते। सो आ जाइयो अगर तुम रिवाइज करनी है चीज़ा। आंसर इज ए महाबलेश्वर। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, एंड देन वी हैव इज तापी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, रिवर्स the session is lined up. We'll be coming soon with the session on rivers. Answer is Godavari. Again, I am repeating. 12 बजे there is a session on geography of India, physiological divisions आपा cover करनी है। Be there at the session at Launchpad IAS and we'll be covering everything. Theory part discuss करना है। We are not doing MCQs. ठीक है जी। Drainage system ते भी video is lined up. We'll be covering that very soon. So I hope session fruitful रहे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। Yes, that is also lined up, Radhika. Very soon we'll be coming up with that. So see you all. Have a good day. I hope you liked the session. Session to like कर दो. That's the bare minimum we ask for. And your feedback is most welcome in the comment section. ठीक है? Questions थोड़े जे tough सीगे। Questions का level तो increase करना ही पड़ेगा so that exam tough आ जाए तो तुसी cope up कर पाओ। ठीक है? Till then keep revising. Have a good day.